So hello friends, today we have Yash Mukand sir. तो इनका पहले नाम अतुल था, अब इनका नाम यश है. So we will today understand कि इनका नाम कैसे change हुआ and हाँ he has a lot of certifications and many other things. NLP practitioner of yoga, Sanskrit University से मतलब a lot of things he has and he will tell us about his life, how he transformed, about like his life from where he came and what he is doing right now. And then we will see how to build a profitable business by doing yoga coaching and coaching for professionals and all. So, yes, sir. How are you doing in your या life? नमस्कार हरिओम. Namaste. जी, I'm doing good. So बहुत बढ़िया. Nice to meet you, Tushar, after a very long time, and thank you for inviting me. So and तो मेरा जो प्रोफेशन, so I'm into wellness. तो सबसे जी. पहले जो मेरा नाम है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई बार. Some people get confused. So my legal name is Atul actually, but my business name is Yash. Okay, so why is this? So Like, हाँ, why? so आप पहले thank you very much. You are the only person who have asked because I have like my website has that information, but nobody actually sees it. So you have actually gone through it, so it's nice. So why I changed my name was, like when so my legal name is Atul, but however my life journey was like that, like I was confused what to do in life. So I did like more than 15 jobs, and I had 15 मतलब MNCs वगैरह में. नहीं, MNC नहीं. I started off with hotels, ठीक है. airlines, and the few corporates I worked for. So Okay. yeah, so it was आप a इतने great ओल्ड journey. लग भी रहे हो. 15 जॉब क्या 2-2 महीने के लिए कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, I used to work for like, yeah, some jobs I worked for a few months, some I worked for 3 years, some I worked for 2.5 years. Good, good. Yeah, it's on and off. Even मैं तो भूल चुका हूँ कि कितनी जॉब्स मैंने की हैं. But yeah, अच्छा. it's been a great experience because मैं जॉब करता था, मैं छोड़ता था, ठीक बट है. उसमें मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ एक इट वाज विद इन माई सेल्फ दैट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन. हम्म. सो ये मेरे अंदर शुरू से था कि मुझे खुद करना है, बट उसके लिए मैंने ऑफ कोर्स आई वाज कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम, जो किसी को नहीं होना चाहिए. बट वो जो टाइम था अर्ली 2000, लाइक mid 2000, like 2010s I would say. ठीक 10 है. 10 11 12 13 14 15 उस समय इतना इंटरनेट भी नहीं था, एंड इन्फ्लुएंसिंग और जो आजकल एड्स के मीडियम से यू कैन अर्न लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट टाइम इट वाज नॉट देयर. दैट टाइम उस समय में क्या होता था, स्टार्टअप्स का जैसे मैंने कोर्स किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑनलाइन स्टार्टअप्स का बहुत अच्छा. क्रेज होता था 2012 में. तो उसमें हाँ. हमारे कुछ फ्रेंड्स बने थे ऑनलाइन, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑन ट्रैवल स्टार्टअप. तो हमने Okay. एक चिली स्टार्टअप के नाम से, इट्स अ स्टार्टअप, इट्स अ सीड फंड. सो वी Okay. अप्लाइड देयर एंड गॉट थ्रू फ्यू राउंड्स. तो उस जमाने में क्या होता था, आज से 10-12 साल पहले जो स्टार्टअप्स ही चलते थे. तो हाँ. ये जो आजकल कोचिंग बिजनेसेस हैं, आपका डिजिटल मार्केटिंग एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, हाँ. वो हाँ. नहीं था. करेक्ट. तो उस समय आपको क्या करता था, क्या करना है आपको, अगर जॉब नहीं करनी तो आप स्टार्टअप शुरू करो, हम्म. वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, व्हाट प्रॉब्लम द सोसाइटी हैज, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट. But करेक्ट. now I think it's more easy. So that's why my journey started off. So I was confused, and then in 2018-19 when I figured out what I want in my life, हम्म. like I started off with training programs, and from that I shifted to coaching, Okay. and then yoga, meditation, now psychology. So yeah, it's been like a complete change. So when I changed my job, so I just it was just a fraction of seconds. I came home and I decided that I'll not go to the office again. So अच्छा. that was in 2017 November. तो तो उसके बाद आपने मैंने जॉब सोचा, जॉब आपकी किस में थी उस टाइम पे उस कौन आई से टाइम? वाज इन वर्किंग फॉर एन एयरलाइन इन सेल्स. ओके. बट मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लोग आजकल बहुत क्रिटिसाइज करते हैं जॉब मत करो. मैं कहता हूँ जॉब करनी चाहिए, ठीक है. बिकॉज जॉब में जो मुझे गेन किया, लाइक आई वर्कड इन होटल्स, इन फ्रंट ऑफिस, आई वर्कड इन किचन्स, आई वर्कड इन हाउसकीपिंग, आई वर्कड इन सेल्स. तो उससे मुझे सारा जो पता लगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या आप क्लाइंट को दे सकते हो, और करेक्ट. किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हो क्लाइंट को. तो उस तरह से, क्योंकि मेरा होटल बैकग्राउंड था, तो मुझे जॉब्स उसी तरह की मिली ज़्यादा, जिसमें क्लाइंट सेंट्रिक था. तो ऑफ कोर्स जो मेरा ट्रेनिंग का काम, कोचिंग का और योगा का भी, वो क्लाइंट सेंट्रिक ही है. सो कहीं ना कहीं वो जो होटल का एक्सपीरियंस था, सो fortunately I worked with the best hotels like the Oberoi New Delhi, Imperial. I worked for ITC Grand Chola. So the best hotel, I got trained by one of the best trainers in the world. Right? I got trained from Singapore Airlines, Kingfisher Airlines, the Oberoi's. तो उससे वो कहीं ना कहीं वो जो एक ग्रूमिंग होती है, चाहे आई वाज फ्लक्चुएटिंग इन माय जॉब्स, बट एक जो बिजनेस एटिकेट्स होते हैं वो मुझे उन्होंने बहुत ट्रेन किया. सो प्रोफेशनलिज्म जो होता है. यस, प्रोफेशनलिज्म. सो वो जो है, एक्चुअली कंपनी हैज स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन मी. सो दैट वाज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी.
but that really fruitful. So I'm really thankful to, like, I used to criticize a lot, you know, working in hotel industry, it's very stressful, and now I'm really thankful to that. So who बहुत चीजें सीखी वहां से, तो तभी तब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तभी आई चेंज माय नेम कि अब मुझे एक मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो कश्मीर में था मैं, तो मैंने फिर सोचा कि उस समय मैं ट्रैवल में था, Okay. सो तो मैंने सोचा आई शुड हैव अ न्यू नेम प्रोबेबली बिकॉज आई कुड कनेक्ट विद यश name in a but on a deeper level, and it's a very good name to connect with Yash other means people. victory, right? Yeah, yash is आप यश को प्राप्ति, it's like यशस्वी, और अतुल इज Yashasvi. मैचेस, बट यू नो यश इज लाइक इट्स कनेक्ट्स वेल देन अतुल, Correct, सो correct. एक कहीं ना कहीं वो भी था। So right now, what are you doing? Like, अभी आपका focus किस चीज पे होता है? हाँ, अभी मेरा फोकस है, सो आई एम ऑफ कोर्स आई एम आल्सो डूइंग माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी, देन आई एम डूइंग माय रिसर्च वर्क इन साइकोलॉजी, दैट्स अ academic thing I'm doing. So next year I'll be passing out from IGNU. Then the secondly, in professional wise, I do projects on corporate wellness. So corporate wellness एक बहुत बड़ा stream है जिसमें आपका योगा भी आता है, mindfulness आता है, meditations आती है, sound healing आता है, and I also do training workshops on like stress management, on handling अच्छा. work-life balance, even mental health also. Okay. Because of my background in psychology, and you know, I did CBT, I did NLP, so a lot of courses I did. So तो that ये really सब helped me shaped, yeah. क्या ये जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड ऑल वेलनेस वगैरह प्रोग्राम्स है, तो क्या ये मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है या फिर स्मॉल स्मॉल कंपनीज लाइक स्टार्टअप्स लाइक अस, लाइक जिनके पास 4 5 10 लोग हैं, उनको भी चाहिए होता है? देखो चाहिए तो सबको, but it's more towards companies are हाँ. looking forward to it. So companies, because people are very stressed out, and also I'm working with lot of aggregators. Aggregators भी हैं इसके अंदर corporate wellness में अंदर, तो उनके साथ भी if they want sessions with me, so they also, you know, do a project with me, like you up 4 5 sessions you do with us. But now post COVID, so now corporate wellness has become like a next big thing for companies. So and अंडरस्टूड. you know, it is quite like it's interesting to work for them, like, तो and creating a holistic experience for them. so right now the company name that you have kept for yourself is 5 elements of yoga. तो Five इसका element center. 5 elements, सॉरी, so 5 element center, इसमें ये 5 elements क्या है? हाँ, तो 5 एलिमेंट्स इसमें लोग समझते हैं कि वो वाटर अर्थ हाँ वो हाँ, होगा, बट जनरल मीनिंग वही निकलता हाँ है. जनरल वो, बट ये नहीं है। ये जो ये 5 लेयर्स हैं जो हमारी एक उपनिषद है वहां से इंस्पायर्ड है, जिसमें 5 कोश आती हैं, जिसमें पहली ओके. कोश आपकी आनंदमय कोश होती है जो आपकी बॉडी की कोश होती है, सेकंड आपकी प्राणमय कोश होती है जो आपकी वाइटल ब्रेथ, वाइटल प्राणा जो आपके शरीर के अंदर है, तीसरी आपकी मनोमय कोश होती है जो आपकी माइंड से रिलेटेड है, फिर विज्ञानमय कोश होती है जो आपके इंटेलेक्ट, आपकी इंट्यूशन को कनेक्ट करती है, और लास्टली आपकी आनंदमय कोश जो आपकी ब्लिसफुल स्टेट। तो ये 5 कोश हैं जो उपनिषद में बताई गई हैं, और इसके बारे में आजकल कोई बात नहीं करता। तो मैंने सोचा जब मैं 5 एलिमेंट्स, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, और ये 5 एलिमेंट्स ही हमारे शरीर, मतलब इट कवर्स योर like your physical body as well as your subtle body and more subtler body. So when you do yoga and you do gym, so you're working on your anandmay kosha, body layer. When you are actually working on your mind, when you are having a positive thinking, you are working on your manomay kosha, mindset. And then when you are doing meditating, or when you are doing some like आपको जैसे आप, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, सो यू विल गेट अ न्यू आइडिया कि ठीक है. कुछ आइडिया आ गया कहीं से, आपने सोचा नहीं था, सो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल लेयर, ठीक विज्ञानमय है. कोश। एंड देन ठीक योर है. ब्लिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी आनंदमय कोश होती है, जो सोल भी कहते हैं, प्योर ब्लिस। प्योर ब्लिस मतलब क्या, आप जो अपनी लाइफ से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, आर यू इन दैट ब्लिस ऑफ सच्चित आनंदा। तो ओके. अगर आप जो आप काम कर रहे हो, तो मेरे लिए वो जो काम है वो सच्चित आनंद है, मेरे ख्याल आपके लिए भी वही है जो आप वट एवर यू आर डूइंग, सो इट्स सच्चित आनंद फॉर यू। तो आप, हमारे लिए ये नहीं है कि आप अगर मुझे बोलोगे कि अभी मेरा एक शूट था 4 बजे, तो मैं अगर चाहता था वो कैंसिल कर देता ये मीटिंग, बट इंटरेस्ट इतना है, आनंदमय कोश इतनी एक्टिवेटेड है कि यू लाइक दिस प्रोफेशन सो मच कि अगर आप 3 बजे भी आप उठाओगे, तो आई कैन स्पीक अबाउट दैट। सो ये 5 लेयर्स हैं। तो 5 एलिमेंट सेंटर का यही एसेंस है कि हम इन 5 लेयर्स पे काम करें, काम करें. बॉडी, माइंड एंड योर इंटेलेक्ट, एंड देन योर सोल लेवल।
बट माइंड पे हम जैसे योग आप हो गया, ब्रेथ आपकी जो प्राणमय कोश है, वर्किंग ऑन योर ब्रेथ, you know, deep breathing exercises, breath work. Then comes your mindset. Mindset वो कैसे आता है, उसमें आपके tools आते हैं, NLP के, आपका CBT आता है, आपकी काउंसलिंग आती है, वो आपकी मनोमय कोश है। फिर आपका जो विज्ञानमय कोश है, जो आपकी इंटेलेक्ट लेयर है, वो आपकी तब बनती है जब आप थोड़ी मेडिटेशन करते हो, जब आप थोड़ा काम डाउन रहते हो, तब क्या होता है, तब आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेयर है वो अपने आप एनहेंस होनी शुरू हो जाती है। और जब ये चारों चीजें हो जाएंगी, फिर आपकी ब्लिस लेयर, दैट मींस व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली सॉल्विंग, यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफ पर्पस। तो मतलब मेरे ख्याल से आप तो हर एक लेयर के ऊपर बहुत डिटेल में एक एक घंटे का लेक्चर भी दे सकते हो। हाँ जी, या So, does this Upanishad also answer this question कि जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, like I have a very short temperament kind of thing. So is there any solution that you have for me? देखो, शॉर्ट टेम्पर्डनेस के लिए क्या है कि सबसे पहले वही है, आपको मेडिटेशन। Okay. कि मेडिटेशन, मैं भी बहुत पहले शॉर्ट टेम्पर्ड था, मुझे भी गुस्सा आता था। एक बार हमारा जब काम कर रहे थे तो आपने देखा था, मुझे भी उस समय आई वाज आल्सो फ्यूरियस। बट वो क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप शांत रहते हो। क्या होता है, जो बॉडी में जो एकदम रश होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन्स का या Just for some एड्रेनलिन, seconds. हाँ एड्रेनलिन होता है, तो वो उसको रिलैक्स कर देता है। और जितनी ज्यादा बार आप ये करते हो, तो मैंने तो काफी लॉकडाउन में बहुत मेडिटेशंस की, 1 आवर्स 45 मिनट्स। तो उससे क्या हुआ, आप अपने आप शांति में चले गए। तो अगर मैं मेडिटेट नहीं भी कर रहा, तभी भी मैं शांत हूँ। तो शॉर्ट टेम्पर्डनेस का वही तरीका है, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। Correct. So just a हाँ, general wellness के लिए, let's say I have to take care of my wellness or mind, body health and exercise. So what do you recommend to people? So for my general wellness, I recommend 5 things, which is your physical health. Physical health, how you can work is you do yoga. अगर आप योगा नहीं कर सकते, go for walk, go to gym. That is a good physical workout. Also go for massage, acupuncture. These are very, very important because lot of stress is in our body. So when we do yoga, when we are working out, when we go to gym, so we are actually releasing lot of our toxins. But अगर मसाज भी करते हैं, तो मसाज से क्या होता है, उससे भी हमारा काफी जो स्ट्रेस है बॉडी में से जाते हैं, हमारे काफी एक्यूपंक्चर पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, जो शायद योगा और जिमिंग से नहीं होते, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है दूसरा, फिजिकल हेल्थ के बाद मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में आप क्या कर सकते हो, जैसे माइंडसेट, वो तो आपको पता ही होगा, जैसे अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना, चैलेंजेस आएंगे, बिकम रिजिलियंस, you know, positive mindset in, what content you are seeing online or offline is positive. So too much of social media is also harmful, and too much of watching movies, Netflix, these are very attractive things, but it actually affects your mind a lot. ये हो गया आपका मेंटल वेलनेस के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप मेडिटेशन हो गया, स्लीपिंग प्रॉपरली, दैट आल्सो हेल्प अ लॉट। फिर आता है आपका इमोशंस में क्या होता है, आपको पता लगे कि हाँ, अब मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ हूँ, सो एक्चुअली आई एम कॉन्शियसली अवेयर ऑफ माय इमोशंस इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा इमोशन आपकी जो सही नहीं है, देन प्रॉब्ली यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ साइकोलॉजिस्ट, कंसल्ट, कोई बुराई नहीं है। तो ये इमोशन हो गए। फिर सेकंड, उसके बाद आता है आपकी ब्रीदिंग। तो जो आपका फोर्थ आयाम है वेलनेस का, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ वे, जब आप एक हाथ छाती पे रखें, एक हाथ नाभि पे रखें, एंड जस्ट टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, that also helps. And lastly is your diet. Whatever we become of what we eat and what we think. So diet, जितना हम सीजनल वेजिटेबल खाएंगे, जितना हम जंक फूड नहीं खाएंगे, सिल्वर में पानी पिएंगे, उससे मन भी शांत रहेगा और दिमाग भी। तो ये 5 रिकमेंडेशन है मेरी वेलनेस की। एक आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ब्रीदिंग एंड योर डाइट। तो अगर जिसने ये कंट्रोल कर लिया, अगर आप इसमें ज्यादा समय नहीं देना है, जो 4 आयाम है, फिजिकल, मेंटल, इमोशंस, सिर्फ 1 घंटा, चाहे जितने भी आप व्यस्त हैं, सुबह आप 1 घंटा निकालें। और डाइट का तो फिर वही है, उसको कॉन्शियसली आप वो करें। सो दीज आर लाइक 5 pillars of wellness I recommend. So I see him like a kind of a corporate yogi that you have built नहीं up yourself, right? योगी तो नहीं है। हाँ हाँ Right, हाँ। that's good.
Yeah, So, like, what do you think where we are heading towards right now? Like in this modern age of shorts, reels, and social yeah, media, influencing and all, सब कुछ बहुत ज़्यादा है. We are very बहुत much ज़्यादा, yeah, crowded. it's too हमारा much. attention span less than 3 seconds का है. So when all these things in front right now, up to artificial intelligence is also the truth right now in front of us. So where we are heading in terms of mental wellness या फिर personal wellness, इन सब के लिए हम कहाँ head कर रहे हैं? Can you? We are heading for a अगर हम mental wellness का नहीं ध्यान देंगे, we are heading for a disaster. You Okay. know, in terms of too much of screen time, too much of because you know it affects even I'm like off Insta for like 10-15 days now. It really affects you, frankly speaking, kahin na kahin, because you are watching other people's all the time. So I was watching it because of my work, but at the end of the day it affects you, wo chahe koi bhi bole. So you need that detox. And too much of social media, you know, too much of you know, content is Content actually consumption. content consumption, so is actually uh, affecting. So it's going to be on balance, positive and negative, because we are also following western ways of living, so Okay. which is more harmful. Western way of living क्या है कि हम parties में जाएं, drinking, smoking, these are become very, very common. This is part of our culture. So if you don't smoke, drink, or go to parties, so it's not like Day one. you will be left out. Yeah. तो आपकी भी मैंने इंटरव्यू देखी थी BNI में. Yeah. तो वो चीज क्या है कि ये जो कल्चर है, इट इज गुड. आप क्योंकि पार्टी में आप क्या करते हो, इट इज गुड, यू नो, या लाइक यू डांस एंड ऑल, इट इज डांसिंग इज गुड, बट आप रात को जागते हो, you eat unhealthy food, you will eat Unhealthy food. nachos, you will eat burgers, you will eat chicken, you will eat all kind of unhealthy food at 11 p.m. at night, 12 a.m. at night, 1 o'clock at night you are having dinner, and then you wake up at around 9 o'clock. तो आपका digestion का है. किसी से पूछो जो ये कर रहे हैं पार्टीज. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, they have digestion issues, they have acidity. Why? Because nightlife. They cannot let go of nightlife, and it's very addicting because you want to go again and again. So you have grabbed a drink, you are also eating food, you are drinking food. मतलब पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या समय है. तो ये है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डिजास्टर. बिकॉज मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, साइबर सिटी के पास. तो अच्छा. वीकडे में हम कभी आप साइबर सिटी जाओ तो वहाँ पे सारे पब्स जो हैं दे आर फुल. Okay. सो बट ये है, अगर जितना हम फोकस करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ पे. अब लोग ऐसा नहीं है, लाइक पीपल आर गोइंग टू लाइक सदगुरु, दे आर फॉलोइंग सदगुरु, आर्ट ऑफ लिविंग. मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं. सो आई रिकमेंड दैट यू नो यू शुड probably go for these kind of experiences, because Sadhguru and Ravi Shankar or other yoga studios, they are doing some amazing job. It really Correct. helps. One of our patients come for therapies, so they're going through Sadhguru. So I recommend that, ताकि उनका जो mindset है वो एक बदले उनका, and they actually वहाँ पे एक community होती है. So Correct. एक community बन जाती है, तो उसमें क्या है, like-minded people है, you can make friends. So that is also very good. ठीक है. तो बॉस, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ. लेट्स से मतलब सदगुरु वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, एंड आई आल्सो फॉलो ऑल दोस थिंग्स एंड आई डू सी देम. बट मेरा एक रिकमेंडेशन ऐसा है, लेट्स से अब मतलब साउथ जाने के मेरे पास टाइम नहीं है. लेट्स से आई डोंट हैव टाइम फॉर मेडिटेशन आल्सो. लेट्स से मैं 1 घंटा नहीं निकाल सकता, बट मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मैं अपना मेंटल वेलनेस ठीक रख सकूं विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑफ माय टाइम दैट आई डोंट हैव. So 5 minutes. ओके. Spend 5 minutes for your breathing, breath work, 4 square breathing. Inhale, retain, exhale on the count of 4, and then retain. 4 square breathing for 5 minutes. Then before, when you get up, just close your eyes and just observe your breath for 5 minutes. When you go to sleep, sleeping के लिए योग निद्रा. बस उतना ही कर लो, और थोड़ा सा आप अपना वर्कआउट एक्सरसाइज कर लो. ठीक है. मूव योगा योर में बॉडी. हाँ, योगा में जरूरी नहीं है कि आपको बहुत एडवांस आसन करने हैं. जो आजकल चला हुआ है कि लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहन के दे आर परफॉर्मिंग आसनास, वो योग नहीं है. योग में अगर आप 4-5 सूर्य नमस्कार भी कर लोगे बहुत है. वार्म अप करेक्ट. करो, प्राणायाम करो 10 मिनट. तो अगर आप 5 मिनट मेडिटेशन, 5-10 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट 10 like 10 minutes, 20 minutes of yoga, and lastly at night योग निद्रा. करेक्ट. तो मतलब तो 15-20 मिनट अगर मैं इन सब चीजों में दूं तो इट हाँ, विल टेक केयर ऑफ माय ओवरऑल वेलनेस. रात में योग निद्रा का है, आप किसी की भी, आप यू कैन सर्च
So like I follow Swami Niranjan and Saraswati from Bihar School of Yoga. Amazing योग निद्रा. मतलब योग निद्रा उनकी बहुत अच्छी मुझे अच्छी लगती है. बाकी आप Google पे सर्च करो तो योग निद्रा is recommended. Actually, I was also doing a project with a rehab center in Delhi. तो वहाँ पे हम योग निद्रा कराते थे पेशेंट्स को एंड इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव. एक और है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक जो हम साइकोलॉजी में भी यूज इट विद पेशेंट्स. तो उसमें क्या होता है टेंशन एंड रिलैक्सेशन. सो इट इज काइंड ऑफ अ योग निद्रा बट इट्स लाइक यू टेंस योर बॉडी पार्ट्स एंड देन रिलीज. अब जैसे आप हो आपके पास टाइम नहीं है और आपको मेल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है क्लाइंट तंग कर रहा है. So you can do like 5 minutes of this progressive relaxation technique, like tension अपनी body को and then relax. Yeah. हेलो आपकी आवाज नहीं आ जैसे रही. जैसे हाथ से बस. हाँ हाथ को आपने टेंस किया थोड़ा सा फिर रिलीज. आंखें बंद की एंड देन यू ऑब्जर्व व्हाट आर द सेंसेशंस यू आर गेटिंग. ठीक है आपने क्लेंच किए फिस्ट या आपने दांत उनको पहले क्लेंच किया कुछ सेकंड तक फिर रिलीज किया. So these are like very very quick capsule programs. So I do promote capsule yoga, capsule relaxation activities. ठीक है Yeah. ठीक है. That's great. So बस अब हम सेकेंड हाफ में मूव करते हैं. Now let's talk about the business part of your five Yeah. element sector. तो मतलब थोड़ा सा सिग्निफाई जैसे आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था पहले कि फाइव एलिमेंट्स का क्या है, तो अभी फाइव एलिमेंट्स में हम लोग कोर ऑफरिंग्स क्या है? Core offerings जो हमारी हैं वो corporate. I don't do much of like yoga classes at per se. So I do one-to-one personalized sessions. So that is of my core offering generally. So I don't do like group classes like 10-15 people. I will only do like one-to-one I work on. So जिसमें that's the first offering. Second is I do projects with MNCs जिसमें we include sound healing aspect, meditations, like even training programs on soft skills like time management, like even business etiquettes, stress management. Then other offerings are sound healing, like exclusive packages for sound healing, which is also there. So like which you can come like experience sound healing for like one or What two is sound sessions. healing? Sound healing is like these are like Tibetan bowls made of bronze, and you strike it and उससे क्या होता है एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आपको वैसा एक अनुभव होता है. सो मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं. लाइक आई हैव डन मोर देन लाइक आई थिंक आई डोंट नो 2000 वर्कशॉप्स. जो जितना मैंने देखा है इफेक्ट साउंड हीलिंग का है उतना किसी में नहीं था. People loved it. It was like they go into like trance. I have done it with addicts at a rehab center. So there was a person, he was a complete drug addict. So he was addict of heroin and weed. And he said after the sound healing class, Yash, it was I'm feeling stoned. So I said, this is not a stoned. This is Sat Chit Ananda. Correct. So yeah, तो इस प्रकार के हमारे programs हैं. And then I have few like team members. We also do expressive art therapy. So I have few psychologists. So they are my friends. So they do expressive art therapy. And then I have few members in my team. We are also into Ayurveda. So they give Ayurveda consultation. Okay. So different segments are there. Yeah, different segments. It's like one-to-one yoga classes, then your sound healing sessions, then your corporate sessions, then corporate training sessions. Okay. So right now, what do you think? What are you doing for your business growth? Like you are doing social media marketing, content creation, website, and all whatever. Yeah. So I'm actually revamping my website. So I'm coming up with a new model. Let's see. I'm working on it for last 3 months. अभी मेरे थोड़े से exam हैं. So I've exams in December. So probably in January I might come up with an online course. So I'm working on that. So I will let you know. It's yeah, that's great. It's something I'm really passionate about. So yeah, it's been working for that. So yeah, in that I will be using social media. Generally, I have not used much of social media, frankly speaking, because generally because I was having a lot of corporate contacts because I worked in hotels. That's through your job experience. So I know a lot of hotel managers, and so sometimes foreigners also come. They also want to experience sound healing. So one of my few guests who I have served them at Imperial Hotel. Yeah. So they come from France. They are still in touch with me, so they want sessions.
And then because I have worked in like various corporates, so through them I get So quite major good number portion of of your leads. business is coming from referrals rather Yeah, than referrals, your yes. own. Yeah. Yeah, it's more of referrals. So what are your thoughts about social media marketing? Yeah, I think it's it's the only way Okay. in today's world to get the business. Uh-huh. But again, you need to have a niche. Uh, That's very, very important. So probably it took me time to finalize the niche. So I have somehow finalized it. So, but let's see if I'm able to like implement it in coming months. So मेरे हिसाब से जो आजकल जो है social media जो marketing है, I think that's the best. It really brings lot of. And what about you? Like you are doing it. What are your thoughts? मतलब लाइक थॉट्स ऐसे हैं कि वी हैव टू कीप थिंग्स रॉ, वी हैव टू बी रियल, बिकॉज जैसे आपने बोला था ना कि यार 1 करोड़ रुपए हर महीना कमाने वाले एड्स चल रही हैं आजकल, हाँ हाँ हाँ. वैसी एड्स बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी बिकॉज पीपल आर स्मार्ट नाउ, पीपल Yeah, नो yeah, हु yeah. इज सेइंग ट्रूथ एंड हु इज लाइक गिविंग फॉल्स थिंग्स। तो अभी अंकित भैयापुरिया का आपने अगर देखा हो, राम राम सारिया ने ऐसे करके एक रील वगैरह काफी चल रही है। सो दिस पर्सन गॉट लाइक 4 million प्लस फॉलोअर्स विद इन अ पीरियड ऑफ लाइक विद इन 3 to 4 months। So such kind of things work because a person who is coming from a village just uploading videos what he is doing. So people like that kind of content, raw content. एडिटिंग लोगों को मसाला भरा हुआ बहुत कुछ देख लिया न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में वो रोज देखने को मिल जाता है। पीपल वांट एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट, एजुकेशन फ्रॉम सोशल मीडिया। सो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट सोशल मीडिया। Yeah, and I think yeah that's the our जो आजकल businesses हैं social media ही है, but आपको जो niche है वो बहुत जरूरी है अपनी रखनी, बहुत जरूरी है, मतलब बहुत और ज्यादा। niche भी ऐसी जो trending हो। आजकल मैं देख रहा हूँ क्या है, लोग एक ही चीज, आपको स्ट्रेस है, आप ठीक है, मेरे हिसाब से मैं भी आई ऑल्सो अटेंड वेबिनार्स ऑफ दीज। तो ऐसा नहीं है कि आप कई लोग क्या हैं, हर जगह पहले एक था कि आप डिजिटल कोचेस बन रहे हैं, तो एक को देखा दे स्टार्ट कॉपिंग इट। सो दैट शुड नॉट बी देयर, इट शुड नॉट बी कि आपको एकदम पैसा कमाना है, पहले आप अपने निश पे काम करिए, और वो इस तरह से बिजनेस होना चाहिए जो ट्रेंडिंग हो, जिसके आगे फ्यूचर हो। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये प्रमोट करने लग जाऊँ कि योगा डू ऑनलाइन योगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। करता होगा बट इट विल नॉट जनरेट दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू। सो करेक्ट। फ्रैंकली स्पीकिंग तो वो चीज है थोड़ी, तो तो आपको अपना जो निश है वो ध्यान रखना है। या लाइक मैं वही पूछ रहा था अभी। सो लेट्स से आई एम अ न्यू कमर, आई हैव दिस सर्टिफिकेशन एंड जैसे आपके पास कितनी सारी सर्टिफिकेशंस हैं एंड हाँ, ऑल थिंग्स आई आल्सो हैव। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर अ लेट्स से आपके 10 5 साल पहले चले जाते हैं, यू टॉकिंग टू योर 5 year ओल्ड वर्जन जो कि आप अभी स्टार्ट करने वाला बिजनेस, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू स्टार्ट विद? अभी जो स्टार्ट विद ये है कि आप पहले नॉलेज गेन करो। सो लाइक आई स्पेंड लाइक 2 3 years गेनिंग द नॉलेज। ओके। लाइक मेरे पास लाइफ कोचिंग का मेरे पास सर्टिफिकेशन है, मेरे सब कोचेस बोलते हैं कि यू नो हाउ मच यू आर अर्निंग, यू नो यू शुड स्टार्ट मोनेटाइजिंग योर लाइफ कोचिंग। आई सेड नो, आई एम हैप्पी विद व्हाट स्किल्स आई हैव बिल्ड इन। तो सबसे पहले आप उसको इम्प्लीमेंट करो। तो एनएलपी जो है मैं शायद किसी को सिखा ना पाऊँ, बट मैं उसको फॉलो करता हूँ अपने लाइफ में। जैसे उससे मैंने अपना जैसे खाने का कंट्रोल कर पाया, उससे अपने थॉट्स चेंज कर पाया। तो प्रॉब्ली आई एम नॉट बी एबल टू टीच दैट टेक्निक्स, बट एटलीस्ट आई हैव फॉलोड इट। तो सबसे पहले क्या है कि एकदम ना, जैसे साइकोलॉजी में भी हम कर रहे हैं, मेरे बैचमेट्स हैं वो कहेंगे यार लेट्स डू क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसमें पैसा बहुत है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले आप ये देखो कि, और ये भी इसमें ध्यान रखना है कि ये पैशन पैशन नहीं करना आपको। मेरा पैशन है, बट पैशन जो है आपका योगा का पैशन है, योगा का मैं योगा क्लासेस करूंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट दैट टू अर्निंग यू विल गेट इन दैट, सो यू हैव टू मिक्स इट अराउंड। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट। अगर मैं सिर्फ योगा योगा कर रहा हूँ, सो प्रोबेबली आई कैन नॉट सर्वाइव इट्स, and you know people may not be able to connect because it's only physical. So ठीक है। I'm going into an intellectual thing. So it is just like you have a, like आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसके बाद आलू भी होते हैं, टमाटर भी होते हैं, various प्रकार की चीजें होती हैं। Like if you go to McDonald's, so they have various, so same you have to become like that as an entrepreneur. Only then you can survive in this day and age. अगर आप एक ही niche पे काम करते रहोगे तो वो सही नहीं है। सो ठीक है, वेलनेस मतलब वेलनेस फील्ड में मैं ये समझता हूँ। या बाकी या फील्ड्स तो जैसे आपकी है उसमें तो ऑफ कोर्स योर फील्ड इज लाइक ऑफ कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, सो व्हिच इज क्वाइट द मार्जिन्स आर प्रीटी हाई। So compared to the wellness field, when you come to online sections of wellness field, the margins are pretty less compared to your model, but it satisfies you on a deeper level.
Correct. Yeah. Okay, so like I have some different take on this particular topic. Anyhow, Yeah. that is totally up to your experiences. कि आपने क्या experience किया and हाँ. what I have experienced, what my gurus told me and what your gurus told me. Yeah. So yeah, that's I think that summarizes all of our thoughts and conversations. And कोई और signing off note आप देना चाहते हो to the हाँ. audience? हाँ, साइनिंग ऑफ नोट ये है मेरा कि थिंक माइंडफुली, eat mindfully, and Uh-huh. yeah, that's it. And you become what you eat and think. Correct. So that's why you have to think and eat mindfully. जो पेट में और जो हमारे दिमाग में वही हम बन जाते हैं सही हाँ, बात क्योंकि क्या है, माइंड है, अगर माइंड में है, देखो अगर पेट खराब है तो माइंड भी खराब रहेगा। करेक्ट ठीक है, गैसेज होंगी पेट के अंदर, ठीक है, पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, आप पार्टी में आपने इतना सारे दाल मखनी और चिकन खा लिया, वो उसको डाइजेशन करने में 2 दिन लगेंगे, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा पेट में, तो क्या होगा, गैसेज बनेंगी, वो ऊपर जाएंगी दिमाग में, आपको गुस्सा आएगा जल्दी। So yeah, that's why brain and gut. So yeah, so that's why I say it's like diet is yoga के अंदर whatever feel wellness में diet is very very important. Diet and your thinking. Alright, wish you all the best आपके नए Yeah, कोर्स thank you. में Wish you and all the best, process. Tushar, also for Yeah, your future endeavors. yeah was. So thank ठीक you. है. Okay. Hari Om Oh, Tassat. Hari Om Tassat. okay. Thank you.